हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके चलते कौन कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं, जिसके चलते जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर वो किसी भी कंट्री से कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। कनाडा में जो सभी प्रोविंसेस हैं उन्होंने भी अपने डिफरेंट जो रेगुलेशंस है वो इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें कि अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पहले अब उस प्रोविंस के रूल्स देखने होंगे कि उसमें अगर कोई चेंजेस आए हैं कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा या आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा पहले। अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करोगे तभी वो आपको अलाउ करेंगे टू एंटर इनटू देयर प्रोविंसेस। फिर चाहे आप वो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो या प्लेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा। एंड जो ओमिक्रॉन के कारण अगर सिचुएशन थोड़ी वर्स होती है तो उसके रिगार्डिंग कैनेडियन गवर्नमेंट कौन कौन से नए रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकती है, आज हम उन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो, प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर कर दे इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप ऐसी कोई भी लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट मिस ना कर दें। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं इन देयर ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स to address the Omicron variant of concern. Effective 21st of December 2021, all Canadians returning from short trips must take a molecular pre-entry test. The test must be taken outside of Canada. And another update was effective 18 December 2021, temporary enhanced requirements ending for all travelers who have been in Botswana, Egypt, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, नामीबिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। इसी के चलते अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो टू कनाडा, फिर चाहे आप कोई भी स्टेटस पे आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो, बीइंग विजिटर, वर्क परमिट, पीआर या फिर कैनेडियन सिटीजन, जो आपका पहले कोविड नेगेटिव टेस्ट है वो आपको ArriveCan में अपलोड करना होगा, जो एक स्पेसिफिक लैब के थ्रू होगा। इस चीज़ों में आप कंफ्यूज मत हो। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हो फ्रॉम इंडिया टू कनाडा तो आपका कोविड टेस्ट जो एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे होगा, वो आपकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। बट अगर आप किसी और कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, हैविंग अ वन स्टॉप फ्लाइट, तो आपको उस कंट्री का कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको ArriveCan ऐप में अपलोड करनी होगी फॉर कैनेडा। बिकॉज वो अभी तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज नहीं किया है कि अगर आप इंडिया टू कनाडा ट्रैवल कर रहे हो बाय थर्ड कंट्री तो उसमें आप इंडिया की रिपोर्ट लगा सकते हो। इंडिया की रिपोर्ट आपको चाहिए होगी फॉर द थर्ड कंट्री जिसके राउट के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो, बट कनाडा के लिए आपको थर्ड कंट्री का कोविड टेस्ट चाहिए होगा, तो आपको वहाँ पे करवाना होगा। तो मेक श्योर जो आपका ले ओवर टाइम है वो इतना हो कि आपको उस कंट्री में आपको अपनी की जो कोविड रिपोर्ट है वो आपको टाइमली मिल जाए। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि उनको लंदन से वाया ट्रैवल कर रहे हैं या वो मिडिल ईस्ट के, बट उसमें 2 आवर्स या 3 आवर्स का उनका ले ओवर है, तो उस केस में आपको रिपोर्ट नहीं मिल सकती बिकॉज कनाडा एंटीजन टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको RT-PCR ही करवाना होगा। एक और बात, अब जैसे कि कनाडा और यूएस ने अपने जो रिस्ट्रिक्शन से उसको थोड़ा सा ईज किया, तो उसमें मुझे किसी ने पूछा था कि अगर कोई इंडिया टू यूएस और यूएस से कनाडा ट्रैवल करता है तो उस केस में क्या होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप वाया यूएस ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री में और अगर आपके पास यूएस का वीज़ा नहीं है, डिस्पाइट आपका 2 आवर्स का ले ओवर है या 5 आवर्स का ले ओवर है, आप यूएस ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपके पास यूएस का वीज़ा नहीं है। इवन फॉर एयरपोर्ट लेओवर आपको यूएस का वीज़ा मैंडेटरी है, उसके बिना आपको इंडियन एयरपोर्ट से ही फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। ये उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यूएस के थ्रू किसी भी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो आपको यूएस वीज़ा होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो ट्रैवल गाइडलाइंस होती है ये आपको आपकी फ़्लाइट बुकिंग के टाइम पे नहीं मिलती जब आप ऑनलाइन चेक करते हो। तो इन चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना होगा जब कभी भी आप वाया ले ओवर फ्लाइट लेते हो किसी भी कंट्री से, तो उनके रूल्स हमेशा देखें कि अगर आप उस कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर आप विद इन कैनेडा ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या रूल्स इम्प्लाई किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द फेडरल गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग कैनेडियंस टू अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल आउटसाइड कैनेडा as the Omicron variant spread rapidly worldwide. But when it comes to travel within Canada, the rules vary. Individual provinces and territories may have their own set of restrictions and quarantine rules that people must follow in addition to federal guidelines. So the first province is Newfoundland and Labrador. 12 years and up entering Newfoundland and Labrador must submit this travel form
within 30 days of their expected travel date. If a traveler is fully vaccinated starting 21st December, incoming travelers must self-isolate for 5 days upon arrival and take a COVID-19 rapid test every day for 5 days. Next is Prince Edward Island. All travelers aged 8 and up will be tested at the point of entry, regardless of immunization status and how long they were outside of the province. If they are fully vaccinated, travelers can apply for the PEI pass, which can be used multiple times and allows entry into the province without the need of self-isolate. But those who are not fully vaccinated, with some exceptions, travelers to PEI who are not fully vaccinated must self-isolate for 8 days and obtain another negative test result on day 8 to leave self-isolation. Next is Nova Scotia. 12 years and up must complete this safe check-in form before entering Nova Scotia from another province or territory. This includes people who are fully vaccinated. Travelers are not required to self-isolate, though testing is recommended for fully vaccinated travelers. But for not fully vaccinated people, travelers may need to self-isolate for 7 days, at which point they can leave self-isolation. Next is New Brunswick. All travelers 12 years and up must pre-register online and provide proof of vaccination or proof of medical exception. For fully vaccinated travelers, they are not required to self-isolate and can apply for a multi-use pass. But for non-vaccinated people, traveler must self-isolate for 14 days or until they obtain a negative test result on day 10 and later. Next is Quebec. Travelers arriving from another province or territory don't need to self-isolate, but the province says non-essential travel should be avoided. For Manitoba, fully vaccinated travelers are not required to self-isolate. However, they are strongly advised to get a COVID-19 test on day 1 of arrival and again on day 10. But for non-fully vaccinated people, travelers must self-isolate for 14 days regardless of test results. And for Ontario, travelers arriving from another province or territory don't need to self-isolate unless they have COVID-19 symptoms. Next is Saskatchewan. As such, for Saskatchewan, there is no specific travel restrictions, but travelers returning from an out-of-province trip do not have to self-isolate. Next is Alberta. As with other provinces and territories, travelers in Alberta must follow the federal requirements for travel within Canada. For the British Columbia, as with other provinces and territories, travelers in British Columbia must follow the federal requirements for travels within Canada. That means proof of vaccination is required for those ages 12 and up on a plane, train, cruise, ships. However, BC Ferries does not require proof of vaccination. Yukon. While there are no travel restrictions barring entry into Yukon, the territory's health officials recommend avoiding travel between communities until further notice. Next is the Northwest Territories. Non-residents are currently not allowed to enter the territory for leisure travel unless they are traveling to a remote tourist locations. All residents entering the territory, regardless of vaccination status, must submit a self-isolation plan. And the last is Nunavut. All travelers who depart or connecting through Iqaluit Airport, including people who travel from Iqaluit to another Nunavut community, must meet the federal travel requirements for vaccination and testing. And now these are the federal requirements for travelers within Canada. So the Government of Canada requires all travelers 12 years and 4 months of age and older to be fully vaccinated and show proof of vaccination to use federally regulated methods of travel. So ये थे सभी प्रोविंस के अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन. अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो आप canada.ca की वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा. इनफैक्ट CBC न्यूज़ पे भी इसका पूरा आर्टिकल मेंशन है, वहां पे भी जाके इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार थॉरली चेक कर सकते हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. एंड इफ यस सो प्लीज इसे लाइक जरूर करना एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी, ट्रैवल सेफ.